Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers to our channel Study Forum. I hope that you all are well. जो बुक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री ग्रेड 6. दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव. डिटेल में जाने से पहले हम इसके कंटेंट को देखेंगे दैट हाउ मेनी चैप्टर्स दे आर इन दिस बुक. सो टोटल 5 chapters are there. First chapter is Indus Valley Civilization. Second is Aryan Era. Third chapter is Muslims in South Asia. This is the part 1. Muslims in South Asia part 2. And the last chapter is Socio-Cultural Development. Now let's have a look on the learning outcomes, and we are going to start the first chapter. After studying this first chapter, students will be able to explain the Indus Valley Civilization in terms of its time scale. They will be able to describe the importance of history. They will pinpoint its strategic location on the map. They will evaluate the religious belief systems in the Indus Valley Civilization. They will explain the structure and salient features of the society in terms of its egalitarian nature. They will explain the absence of horse and the presence of bull as the chief insignia of the Indus Valley Civilization. They will be able to describe the agriculture patterns of the Indus Valley Civilization. So now let's begin with this first topic of the chapter, which is the importance of history and why do we study history. As you know, history is very important. It has now gained the status of a subject. कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक हिस्ट्री है. हर नेशन, हमारा जो भी गुज़रते हुए हालात वाक़यात हैं जो कि अब प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सब हमारे माजी का हिस्सा बन चुके होते हैं, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके होते हैं. तो इन सारे हालात व वाक़यात के मुताले का नाम ही तारीख़ है बेसिकली. और हिस्ट्री ये इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल लाइफ में भी और एक नेशन की लाइफ में भी. क्यों? क्योंकि आपको हेल्प करती है, आपकी असिस्टेंस करती है ताकि आप प्रेजेंट को ठीक कर सकें और फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकें. इस आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आया हिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या होती है. The importance of history, it cannot be denied. It an organized study of past. It examines the result and effect of the events of past away nations. जो कुछ भी मुख्तलिफ जो माजी में अक़वाम आ चुकी, जो उनका राइज़ हुआ, उनका फॉल हुआ, उनका डिक्लाइन हुआ, तो क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने तरक्की की, वो बामे अरूज तक पहुँची, और वो उन रीज़न्स को भी हम हिस्ट्री में ही देखते हैं कि जिसकी वजह से उनको उन कौमों को ज़वाल आया. इस तरह से क्या होता है कि जब हमें मालूम होता है रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो हम अपनी जो प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर की जो प्लानिंग है किसी भी नेशन की लाइफ में उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमें हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की नॉलेज होती है डिफरेंट नेशंस के बारे में. तो ये आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? आपको हिस्ट्री के ज़रिए पता चला कि एक कौम उसकी वो कैसे उसने अरूज तक पहुंची और उसको ज़वाल कैसे आया. नेक्स्ट है जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे आर लिंक्ड लाइक अ स्ट्रिंग. यानी कि जो आपका माजी है, आपका हाल है और आपका फ्यूचर है, ये ऐसे हैं जैसे कि ज़ंजीर और ज़ंजीर की मुख्तलिफ कड़ियाँ जैसे आपस में जुड़ी होती हैं ना, इसी तरह से जो है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो आपस में जुड़े होते हैं एक साथ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो माजी है उसका असर हमारे प्रेजेंट पर भी पड़ता है और हमारे फ्यूचर को भी वो मुतासिर करता है. आपने देखा होगा कि जो आपने माजी में गलतियां की हैं, जिनसे ऐसे तजर्बात आपकी लाइफ में ऐसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात आए हैं जिसका असर आपके हाल में भी हुआ और आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है, फ्यूचर के बारे में जिस तरह आपने सोचा है, वो पॉलिसी किस तरह से इफ़ेक्ट हुई, वो आपके फ्यूचर पास्ट की वजह से उसने आपकी फ्यूचर की पॉलिसी को भी मुतासिर किया है. उसके अलावा हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमें किस तरह से हेल्प करती है. हम हिस्ट्री के ज़रिए पढ़ते हैं मुख्तलिफ नेशंस की जनरेशंस
کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مختلف اقوام کے ٹریڈیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، وی پلان فار اوور فیوچر. The study of history open new ways to learn. The map of the event of 1,000 years comes in mind and we obtain information about food, dress, living, profession, building, rise and fall and destruction of the nations. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ماضی کا میپ یاد آ جاتا ہے، وہ ایک نقشہ سا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آپ کسی نیشن کے بارے میں پڑھتے ہو، اس کے فوڈ، آپ کی ان کی جو وے آف لیونگ تھا وہ کیسا تھا، وہ کون سا پیشہ اختیار کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا جو گھر جس طرح کے بناتے تھے وہ کیسے تھے، اور پھر اس کے بعد اس قوم کو کن وجوہات کی بنا پر وہ اتنے کامیاب ہوئے. they got success and they rise and then they fall suddenly and then after that we discussed the destruction of the nation. تو یہ اتنی ساری انفارمیشن آپ کو کیسے ملی؟ آپ کو تاریخ کو اسٹڈی کر کے، ہسٹری کو پڑھ کے آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے. The study of history provide us comprehensive knowledge about historical heritage and values of nation. دنیا میں جتنی بھی مختلف اقوام آباد تھیں، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے جو اقدار ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری کے ذریعے ہی پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسلم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ جب مسلمس دے رول دا ورلڈ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا اور وہ ریزنز بھی ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو زوال آیا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی انڈس ویلی سویلائزیشن، وہ امپورٹنٹ اینشینٹ سویلائزیشن جو کہ ہمارے پاکستان مینلی جو پنجاب اور سندھ کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ آباد تھی. اس کے ٹریڈیشنز، اس کے نارمز، اس کے کلچر کو ہم ڈسکس کریں گے. بہت انفارمیٹیو جو ہے یہ ٹاپک ہے. تو آنے والی جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. تھینک یو.